So good afternoon, everybody. This is Bishwajit Datta, Director, Success Ed Education Services, Bhopal, Madhya Pradesh. Before getting into the topic, I would request you, all the students and the people who are into this, watching this particular video, to just have this particular channel of our channel of our center to be subscribed, and be able to get more and more videos on this of similar kind. Today the topic that you could see here is a sort of controversial in fact, and we're going to see what exactly happened so far till date in the Delhi excise policy. Particularly we'll know what is happening in the Delhi excise policy probe, in which you will find that the Deputy Chief Minister of Delhi has been finally incriminated, and what are the issue whole put together we are going to discuss right now. And with this I'll try to give you a picture of what exactly happening in the excise policy and the market related to all the excise commodities in Delhi government. This is basically an issue which is completely 1 year old, you can say. I mean, this is not a new issue. This is an issue which is already going through for the last so many months. In fact, in the last year in July 2022, Delhi के जो Chief Secretary है, in fact right now his name is Mr. Naresh Kumar. He wrote a letter to the Lieutenant Governor basically, because when he investigated the matter, he found that there are certain irregularities, there are certain procedural manipulations in the excise policy of the Delhi government. So he wrote a letter to the Lieutenant Governor. The Lieutenant Governor right now is Mr. Vinay Kumar. Mr. Vinay Kumar, and ultimately when the matter went to the Lieutenant General, after reading that particular issue, he wrote the letter on the same day, in fact within a very short period of time, to the Home Ministry and demanding a CBI inquiry as to how the excise policy has been implemented in the state. Now, there is a very interesting part in this excise market, excise policy. If you are living in Delhi, that means the capital of India, you know that liquor is sold at a very normal, it's a very huge level in that place. At every evening, if you are doing a party, the party without liquor is not a party. So in Delhi you cannot say that liquor is not going to be consumed. ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जो ड्राई हैं जहाँ पर लिकर नहीं चलता है. गुजरात इज वन ऑफ देम. तो दिल्ली में ऐसा नहीं हो सकता. दिल्ली मीन्स लिकर चलेगा. Any party, any evening discussion, everywhere it's liquor is always be there. So liquor is a big thing. It's a very profitable business in Delhi basically. And the Delhi government decided finally कि ये जो लिकर है, चूंकि लिकर इज कम्प्लीटली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट एजेंसीज इसको कंट्रोल करती है. तो जब गवर्नमेंट एजेंसीज कंट्रोल करती है तो आपको ये तय रहता है कि मेरे को किसको लाइसेंस देना है, किसको लाइसेंस आपको नहीं देना है. तो ऑल द लाइसेंस आर गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. कितने वेंडर्स आएंगे, कितने वेंड्स खुलेंगे, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. प्राइस कितना होगा इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. एवरीथिंग दैट इज एसोसिएटेड विद अल्कोहल, लिकर, इट इज ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. तो दिल्ली गवर्नमेंट को ये लगा कि यार ये कंट्रोल हटा देते हैं. लेट अस डू वन थिंग, इसमें जितना भी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, जो गवर्नमेंट इंटरप्शन है उनको हटा देते हैं. एंड लेट अस मेक द मार्केट कंप्लीटली ओपन फॉर द प्राइवेट पीपल. जिसको भी लगता है वो शराब मैन्युफैक्चर कर सकता है, शराब बेच सकता है. अब शराब मैन्युफैक्चर करके कोई भी व्यक्ति मार्केट में बेच सकता है, विच इज समथिंग वेरी न्यू फॉर द स्टेट. एंड दिस वाज गोइंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 2021-22 कि दिल्ली का मार्केट बिल्कुल एकदम प्राइवेटाइज कर देंगे. दैट मीन्स जिसको लगेगा वो मार्केट में शराब बेच सकता है. दैट मीन्स एवरी इंडिविजुअल इन द मार्केट हैज एवरी राइट कि यदि उसको लगता है कि मुझे लिकर बेचना है, मुझे लिकर मार्केट में आना है, तो ही कैन कम इनटू द लिकर मार्केट. देयर इज नो प्रॉब्लम.
And what was the purpose to have such kind of a liquor policy under the excise department, to have liquor to be sold by any private party in the market? There were so many reasons. पहला तो the revenue will increase because liquor तो consumption होता ही है. आपने लॉकडाउन पीरियड में भी देखा कितना लिकर कंज्यूम हुआ है. ह्यूज अमाउंट ऑफ लिकर इज कंज्यूम्ड बाय द पीपल. मतलब दुकानों के सामने लंबी लाइन लगी होती थी जिस टाइम पर कोरोना के टाइम पर हम जूझ रहे थे अपनी लाइफ से. पीपल हु वेर हैविंग द रेगुलर हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, दे वेर स्टैंडिंग आउटसाइड द liquor shops all together from morning onwards just to have a bottle of liquor. You could understand that the demand of liquor in the state or anywhere else in the country is very huge. So government has decided, let us make it privatized. Ultimately we are going to increase the revenue. So when the revenue will increase, automatically the taxes are going to be collected more and we'll have a better position right now. तो गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज कर दिया. सारा लिकर मार्केट में जो बिकना है वो पूरा का पूरा प्राइवेटाइज तरीके से बिकना है और इसमें कंपटीशन बढ़ेगा. मोर एंड मोर पीपल विल गेट इनटू द मार्केट. कंपटीशन बढ़ेगा, रेट थोड़ा सा कंट्रोल होगा, रेट विल बी कंट्रोल्ड. पब्लिक को पॉलिसीज, पब्लिक को जो लोग ड्रिंक करते हैं उनको क्वालिटी मिलेगी, क्वालिटी के साथ में रेट भी मिलेगा. एंड गवर्नमेंट इज गोइंग टू अर्न लॉट ऑफ प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट. फायदे से रेवेन्यू बढ़ाना. और ब्लैक मार्केटिंग अब बहुत ज़्यादा लेकर में होता है. आई मीन इस तरह के प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग होता है. ब्लैक मार्केटिंग का मतलब है, मान लीजिए कितना माल मार्केट के अंदर आ रहा है टैक्स वाला और कितना माल बिना टैक्स वाला आ रहा है. यू वुड सरप्राइज टू नो दैट द अनटैक्स्ड मटेरियल दैट कम्स इनटू द मार्केट आर मोर देन दैट ऑफ द टैक्स मटेरियल. तो वो भी एक रुकने का एक बढ़िया सा सोल्यूशन मिल गया, दैट वी आर एबल टू स्टॉप दैट. हम सारा ब्लैक मार्केटिंग रोक सकते हैं. तो गवर्नमेंट को ये कॉन्सेप्ट बहुत सही लगा, दैट वी आर गोइंग टू फ्री फ्रॉम द मार्केट. गवर्नमेंट के पास टाइम नहीं है कि लिकर वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वी आर नॉट गोइंग टू सी दैट. Let us open the market, let it be privatized, and let all people who are interested into the market, let them come and do whatever they want to do. ऐसा करने के बाद they got to figure out that around 8,900, तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए का इनका डिविडेंड, इनका वैल्यू, इनका अर्निंग जो है बढ़ गया दिल्ली गवर्नमेंट का. सो इट वाज समथिंग ग्रेट. तो जब इतना प्रोग्रेसिव बिजनेस होता है तो फिर तो कॉन्फिडेंस आता ही है. और जब कॉन्फिडेंस आता है तो यू फील लाइक टेकिंग मोर एंड मोर स्टेप्स आउट. आप बाहर जाके स्टेप अप करते हो और आप और बड़े बड़े डिसीजंस लेते हो. तो जब चीफ सेक्रेटरी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को लेटर लिखा दैट देयर आर सर्टेन मैनिपुलेशंस दैट वी फाउंड इन द एक्साइज पॉलिसी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट. किस तरह के मैनिपुलेशंस मिले? दैट देयर आर सर्टेन इरेगुलरिटीज इन टर्म्स ऑफ देयर आर प्रोसीजरल लैप्सेस. जो प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए लोगों को लाइसेंस देने के लिए, वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किए गए. And all those steps are taken by the excise department, by the commissioners after seeking the permission from the excise ministry, that means from Manish Sisodia. There is always a policy, there is always a protocol, and the protocol was that you need to discuss with the councils of minister and the matter has to bring in the notice of the lieutenant governor. After getting the right accord from these two, you are able to implement whatever that finally comes out on table. बट ऐसा कुछ हुआ नहीं और यहाँ पर डिपार्टमेंटल डिसीजंस काफ़ी लिए गए. एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल डिसीजंस मोर एंड मोर लाइसेंसेस वेर गिवन टू द पीपल हु आर इनटू द लिकर बिजनेस एंड मार्केट एंड सो ऑन. तो दिस इज द होल स्टोरी ऑल अबाउट. जिसमें जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ CBI का, बिकॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर वेन रोड टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दैट इसमें हमें CBI इंक्वायरी चाहिए. Because I believe that there is huge amount of money loss has been done by the Delhi government just by getting away from the procedure with which the license has to be given to the people who are into the business. तो जब CBI इंक्वायरी चालू हुई लास्ट ईयर, तो CBI इंक्वायरी के तहत ही लास्ट ईयर इनफैक्ट जुलाई अगस्त के अंदर ही मनीष सिसोदिया who was the deputy chief minister of Delhi, including him and the other people who are into the whole business, करीब ऐसे 21 लोकेशंस पर रेड किए गए जस्ट टू फिगर इट आउट हु आर इनटू दिस कंट्रोवर्सी. ये कहाँ से आया, इसके पीछे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ. क्योंकि पूरे के पूरे इन्वेस्टिगेशन में, पूरे के पूरे प्रोब में ये था कि भाई गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे, मनीष सिसोदिया ने काफ़ी सारे एडवांटेजेस जो है ऐसे मैन्युफैक्चरर्स को या लाइसेंसेस को दिए थे which was not at all necessary. और ये लाइसेंसेस को बेनिफिट्स देने के बजाय द पार्टी हैज गॉट लॉट ऑफ मनी somewhere in the tune of 100 crores and
that the party has taken, and with that money the party has fought an election in Punjab and Goa. तो ऐसा कहना था, दिस वाज द एलिगेशन ऑन देम. तो इस एलिगेशंस के तहत जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, तो लास्ट ईयर इन जुलाई 2022 अराउंड 21 लोकेशंस अक्रॉस द प्लेसेस जहाँ पर रेड हुई, एंड इट वाज फाउंड दैट कुछ जगह पर कुछ चीज़ें मिली, कुछ जगह पर कुछ और चीज़ें मिली. बट मनीष सिसोदिया who was the chief minister of Delhi by that time, अभी तो उन्होंने recently resignation दे दिया है. Yesterday he gave the resignation ultimately, but उस resignation उस समय वो पोस्ट पर थे and ultimately कुछ मिला नहीं. But the investigation was kept on moving, वो आगे चलता गया और ठीक एक महीने के बाद जो एक्साइज कमीशन, एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर जो कम्युनिकेशन इंचार्ज थे मिस्टर विजय नायर, who was the main, I would say the person who designed that whole policy for the liquor in order to market that liquor in the market. तो उन्होंने वो पॉलिसी बनाई थी, तो वो उनको पकड़ लिया, सीबीआई ने उनको पकड़ के अरेस्ट किया उनको कि भाई आपने जो पॉलिसी बनाई इसके अंदर आपने बहुत सारे प्रोसीजरल लैप्सेस किया. यू हैड नो राइट टू डू दिस, ऑन व्हाट ग्राउंड और ऑन व्हाट अथॉरिटी आपने ये सारे राइट्स एग्जीक्यूट किए, जबकि आपके पास तो ऐसे कोई राइट ही नहीं थे. तो अल्टीमेटली राइट नाउ वो अरेस्ट हो चुके हैं, वो जेल में है और हाई कोर्ट में उनका केस ऑलरेडी अभी चल रहा है और वो इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे आगे बढ़ी. और रिसेंटली February 26 संडे अभी मनीष सिसोदिया जी को जो नोटिस मिला था बाय द सीबीआई टू अपीयर फॉर एन इन्वेस्टिगेशन इन दिस प्रोब, दैट इज द एक्साइज पॉलिसी प्रोब ऑफ दिल्ली. तो पहले तो उन्होंने टाला, दैट आई एम राइट नाउ बिजी इन सच एंड सच थिंग्स, सो आई वोंट बी एबल टू कम. बट देन आफ्टर 1 week ऑफ टाइम अगेन ही वाज अगेन नोटिस्ड कि आपको आना पड़ेगा. द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी वेटिंग फॉर एनी लॉन्गर फर्दर, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू कम टू द सीबीआई ऑफिस. तो अल्टीमेटली उनको सीबीआई ऑफिस जाना पड़ा एंड सीबीआई ऑफिस में जो इन्वेस्टिगेशन में जो पूछताछ हुई एंड आफ्टर दैट डिस्कशन, आफ्टर दैट इन्वेस्टिगेशन, द सीबीआई बिलीव्स दैट दे हैव certain evidences that is enough to मतलब सिसोदिया, मनीष सिसोदिया जो चीफ मिनिस्टर है उनको उनके अगेंस्ट में बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिले which are enough to make him one of the offenders in this whole controversy. But Mr. Sisodia was not ready to answer in all of them. He was not answering in that properly. The investigation did not go well. So ultimately, when the investigating authority found that this man is not at all accepting, even after producing a lot of evidences, and which is enough to make sure that this man has already been involved into this whole controversy. So ultimately, under section 41A of CRPC, जो ये कहता है कि यदि आपको कोई नोटिस मिलता है by the competent authority, particularly by the court of competent authority, to be a part of इन्वेस्टिगेशन, यदि आप उस इन्वेस्टिगेशन में पार्ट बनते हैं एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ एविडेंसेस स्टिल यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ, देन ऑन द बिहाफ ऑफ दैट नोटिस द अथॉरिटी और द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी कैन अरेस्ट यू. तो फाइनली ऑन संडे मनीष सिसोदिया वॉज अरेस्टेड particularly for finding an incriminating role in the controversy of liquor problem in Delhi. और अल्टीमेटली आज रिसेंटली उनको फाइनली अपने औहदे से भी रिजाइन करना पड़ा. तो ये मान रही है सीबीआई, ये मान रही है दैट इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा इन गिविंग ऑल दोज एडवांटेजेस टू द लिकर मैन्युफैक्चरर्स, टू द पीपल हु आर इनटू दिस लिकर बिजनेस एंड सो ऑन. अब इन्होंने ये आरोप क्या क्या लगाया, व्हाट आर द डिफरेंट ऑफेंसेस दैट आर केप्ट, दैट आर पुट ऑन दिस डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर. उसमें पहला ये था कि भाई जब ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड लिकर मार्केट में बिकता था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द होलसेलर हैड अ मार्जिन ऑफ अराउंड 6%. So all of a sudden when we have shifted from the older one to the newer one, the wholesale margin has increased to 12%. तो 6% से 12% कैसे चला गया? Number one, on what ground you gave this leverage to these people? Number one. Number two, when the market got opened and it got privatized, there was a scheme of 1+1 that was deliberately given to the customers. मतलब उन्होंने स्कीम चलाई कि होलसेल मार्केट में आप 1+1 माल बेचो, मतलब 2 बेचोगे तो उतने टैक्स देना पड़ेगा जितना कि आपको एक बॉटल पर टैक्स देना पड़ता है.
So around 1+1 की scheme चलाई market में, and whatever extra business that was carried out, the government did not ask any license fee on that. Number one. Number two, there were around 25% of discount that was given to all the liquor seller in the market. उसके अगेंस्ट में भी गवर्नमेंट ने कोई भी टैक्सेस कलेक्ट नहीं किया. I mean, neither in the form of a license nor in the form of taxes and so on. And then after that, the people who are into this business, they requested the government that during the corona period, the vents were all closed, put together for so many months. We did not do this business. तो उस business को आगे बढ़ाने के लिए there was a discount of 25% that was given to those manufacturers as well as the sellers. Now there is a policy, there is a protocol that is to be followed, that whatever change that you come with in this policy, it has to be always discussed in the cabinet. That means the councils of ministers have to be a part of that discussion, and the discussion has to be finally taken towards the lieutenant governor, and only after seeking the opinion of the lieutenant governor you are able to implement that. तो ऐसा कुछ भी नहीं किया और अल्टीमेटली 25% का जो डिस्काउंट है वो अल्टीमेटली सारे के सारे मैन्युफैक्चरर्स को दिया गया, सारे के सारे सेलर्स को दिया गया. बहुत माल प्रोड्यूस हुआ, एक्साइज ड्यूटी के फॉर्म में कम आया पैसा गवर्नमेंट के पास में. अलोंग सेल के बाद जो टैक्सेस वगैरह लगते हैं, जीएसटी वगैरह लगता है, उसमें भी टैक्सेस कम आए. लाइसेंस फी के ऊपर भी कुछ चेंजेस नहीं आए. इनफैक्ट इसमें एक और बात प्रोब में सामने आई, दैट द सीबीआई इज सेइंग दैट कि जब भी लाइसेंस कंप्लीट होता है आफ्टर मार्च 31 उसको रिन्यू करना होता है. तो रिन्यूअल के समय पे इन्होंने क्या किया, 2 महीने का एक्सटेंशन दे दिया. दैट मीन्स अप्रैल एंड मई. उसके बाद फिर और 2 महीने का एक्सटेंशन दिया. दैट मीन्स देयर वर 2 कॉन्सिक्यूटिव एक्सटेंशंस गिवन टू दी सेलर्स फ्रॉम अप्रैल टू मई एंड देन फ्रॉम जून एंड जुलाई. एंड फॉर दैट there were no discussion taken place in the councils of ministers, neither the matter taken to the LG, and ultimately all the things are done by the excise department after taking the response, after taking the discussions from Manish Sisodia. Now all these things are called as procedural lapses. So you did not follow the right procedure as to how these all things are to be done. और इसके अंदर एक बात और थी जिसमें 4 महीने का जब आपने अल्टीमेटली एक्सटेंशन दिया, इस एक्सटेंशन के अगेंस्ट में आपने कोई लाइसेंस पे नहीं लिया. नॉट ए सिंगल penny was taken from the licensees against all these favors. These undue favors are given to those people and nothing was collected from them. Or last when there were certain licensees who were not paying their license fee for quite some time. They were putting a lot of excuses that we were under corona period, we were under such and such circumstances, so we did not collect too much of money. The profit and the revenue did not generate as per the expectation. So right now we are not able to pay to the government. तो उन्होंने गवर्नमेंट को पे नहीं किया. तो जब गवर्नमेंट को पे नहीं किया तो पूरा एक्साइज डिपार्टमेंट ने क्या किया, इनके सारे जितने भी पेंडिंग पैसे थे उनको वेव ऑफ कर दिया. बोले ठीक है चलो हम आपको वेव ऑफ कर देते हैं, नाउ यू गो फॉर द न्यू लाइसेंस फी, पे द न्यू लाइसेंस फी, पुराना वाला भूल जाओ. नाउ दिस ऑल थिंग्स दैट द डिपार्टमेंट हैज डन without taking the discussion with respect to the other cabinet ministers, also have not seeked the permission of the lieutenant governor. तो इतने सारे procedural lapses के कारण Manish Sisodia has come into a situation that he was a part of the whole scene, and the evidences are such that it feels as if he was a part of the whole business. So therefore he was finally arrested. Now after his arrest, it is required to found as to what is going to happen in the Delhi government, particularly within the cabinet. Now, as you know that the cabinet ministry in Delhi government have around 7 positions, out of which 2 positions are gone. जिसमें से एक Mr. Satyendra Kumar Jain, he was holding the Ministry of Health, और उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे. लास्ट ईयर he got arrested and right now he is still in the Tihar jail and finally fighting himself in order to get bail. उनको भी अल्टीमेटली अपना पूरा का पूरा जो पोर्टफोलियो वो मनीष सिसोदिया को देना पड़ा. You would be surprised to know that Manish Sisodia is holding around 18 different departments in the Delhi government, which is not surprising, which is not surprised to understand if you can feel it as if he is running the Delhi government. Now you talk about departments like education, it is Manish Sisodia who is heading it. You talk about excise, it is with Manish Sisodia.
You talk about power, it is with Manish Sisodia. You talk about industry, you talk about art and culture, you talk about urban development, you talk about irrigation, you talk about finance, you talk about health, you talk about education, you talk about uh, any department you name it, it is with Manish Sisodia. तो ऐसा लगता है कि he is actually running the whole government. तो ऐसे व्यक्ति को if you are going to arrest and you are going to finally put him under investigation and prosecute him, so you could understand that the government will get down, topple down होने की situations में होती है. तो right now there is an unprecedented challenge which has come up recently with the Delhi government, the Aam Aadmi government, because Manish Sisodia is considered as one of the closest as well as the most trusted colleague of Arvind Kejriwal in his cabinet ministry. Also not that, whatever NGO that they were running, Arvind Kejriwal along with Manish Sisodia, by the time they were not into politics, they have taken major issues like ration card, like electricity problems, like Right to Information Act and so on. So these people have a very close connection between them. And then out of which one person has right now been arrested, and that too at a time when the Delhi government is about to present their budget session in the first or the second week of March, which by the time the government made for the very first time in 2014, it was Manish Sisodia who presented the budget session, and from then almost every time it was Mr. Manish Sisodia who has been presented the budget sessions. So abhi budget session ko bhi present karna hai in the time to come, that means in this month, maybe in the first second week of March 2023. So there is an unprecedented challenge which is right now the Aam Aadmi Party is facing, and against which you could figure it out that why somebody is giving this much amount of favor to the manufacturers in the form of license fee, in the form of discount, in the form of wavering and all that. So the allegation is that the Aam Aadmi Party must have taken somewhere more than 100 crore rupees with which they have fought the elections. When the investigating authority was doing the investigation, they found that Manish Sisodia had 4 different cell numbers which he had collected by the name of somebody else, which finally he destroyed. And there were around 100 phones, smartphones, that were purchased by the name of different people, manufacturers, sellers, and the lobbies included in this business. And those were either destroyed or formatted, because some of the cell phones are actually captured by the CBI, and ultimately they found that most of the cell phones are either formatted or destroyed. So that created some of the important evidences that they have collected from that, finding Mr. Sisodia to be incarcerating himself into this offense as per the evidences shown by the CBI. Now the time will tell us as to what is going to happen, because recently not only the deputy chief minister has been arrested, उनके excise department के जो भी commissioner थे, the commissioner, deputy commissioner, assistant commissioner, all are actually been arrested, and the probing is going on, the investigation is finally going on, and I think within a few days we will get to know what is the clear picture in this. Recently the portfolios are to be given to other ministers in order to run the government smoothly. So the time is going to tell us as to what is going to happen in this. Hope you will understand the idea of discussions in this particular subject, that is Delhi excise policy controversial issue, and the deputy CM is right now in the custody. Thank you so much. May God bless you, and bye-bye.